Hello, hello. क्या हाल चाल? Let me get some setup done properly. Okay. How's it going, guys? क्या हाल चाल? Let's wait for a couple of people to come in. All right. Hey, guys. How are you? MD says namaste, sir. Namaste, namaste. Are you able to hear me okay? Namaste, namaste, MD ji. क्या हाल चाल? Okay. Who else do we have here? सत श्री अकाल पाजी. Hello, Chetan. सत श्री अकाल. क्या हाल चाल, Chetan? Good, good. Okay, loud and clear. That's perfect. Good. By the way, ये setup कैसा लग रहा है यार? I hope you can see this clearly on the live. ये बड़ी मेहनत करके ये वाला बोर्ड बनाया. How do you like it? Okay. Okay, Manish says, make some technical videos. You don't have any single video on technology. Don't waste our time and your. Thanks, Manish. कोई जबरदस्ती नहीं है यार. नहीं पसंद आ रहा तो मत देख. Don't worry about it. So, Manish, technology videos, if you're expecting me to make a video on Ansible or Kubernetes, वो तो मैं नहीं बनाऊंगा. Because वैसे videos तो बहुत सारे available हैं. बहुत सारे better लोग हैं जो मुझसे बना सकते हैं. Right? So, वो तो नहीं मिलेगा. Yes, I do on and off put technical videos where, I talk about my perspective on technology. For example, you can see I just did a video sometime back on what is platform engineering, and it was in detail. Then there was another video on comparison of DevOps and platform engineering and SRE. Right, so on and off, whenever I think there's something important to talk about technology, I do make those videos. And the idea of this channel is to mix technology and spirituality. So if that's your jam, if that's your interest, then this is the place. I also make videos on other things, but if that's not up to your liking, then maybe this is not the channel for you, right? So how to set up a Kubernetes cluster, बहुत better लोग हैं जो मुझसे better बात कर सकते हैं. आप उनके चैनल जाके देख सकते हो for sure. Okay. Okay, let me check the comments here also. Oh yeah, Guru is there. Of course, Agile Guru है ना वो सब चैनल बनाने के लिए. Correct. He is the right person to do these kind of things.
So my goal is to give you guys a slightly different perspective and how to succeed in your career with spirituality. That's what we're going to talk about today, and how to use, how to amalgamate spirituality and technology. That's my spin at all of that, right? So, so that's what I'm here to talk about. मनीष जी इतना गुस्सा क्यों? टेक इट इजी, इट्स सैटरडे. क्या हो गया मनीष? ऑफिस में काम करना पड़ रहा है क्या आज? गुस्सा मत हो यार, आराम से करते हैं, राइट? ओके, सो let me just have a quick look at the comments also. So Agile Guru says tech is one side, other side is also important. Absolutely, I agree with you, Guru. And our goal is to provide a holistic view of things, right? Okay. So so all those who are logged in, why don't you, in the comments, why don't you tell me which city you are from? Let's keep it a little interactive. Let's keep talking to each other. So just type in the name of the city where you're logging in from. Okay. And also uh, describe in one sentence what is spirituality. Right? So let's get that going. So let me put that here. Describe what is spirituality in one sentence. चलो बताओ अपने अपने आंसर्स. या ओके, तब तक मैं कुछ और कमेंट्स पढ़ता हूं. Hi sir, is there any jobs only on AWS? Shri Kumar. So Shri Kumar, there are specific jobs for AWS engineers, yes, but I would advise, don't just focus on one cloud. Yes, make one as the primary cloud, but you should be open to working in any environment, right? Because you never know what your organization will end up using. And typically, in the long run, organizations do tend to use multiple clouds based on their workloads, based on their situations. For example, I have seen a lot of organizations use AWS, then also use GCP primarily on the data side for their data lakes, and also Azure because they have a lot of use cases which are specific or which are more suited to things like Azure functions, right? Primarily on the .NET side of things. So only AWS specific jobs hote hain, but I would say don't limit yourself. Start with one cloud, learn that one cloud, and then keep yourself open because company mein bhi clouds change ho sakte hain. Okay, some people logged in from Hyderabad, people from Delhi as well. It's good. It's good. Arnav Agarwal is from Delhi, Shri Kumar Hyderabad. और कहाँ से हो यार बताओ. Okay, Chetan says, I thought you can make tech video very easily. The way you explain is really soothing and understandable. Me, basically from Indore, but logging from Pune. अरे वाह. Hi Chetan, मैं भी पुणे में हूँ यार. कौन से एरिया में हो पुणे में? Just type that. Yes, of course I can make tech videos. इतना तो आता है टेक्नोलॉजी. बीच बीच में मन करा तो बना भी देंगे यार, ऐसा क्या है? आई एम नॉट टू हंग अप ऑन दैट. बना देंगे यार कुछ तो, डोंट वरी. ओके, गुरु सेज Sutton Surrey, UK. Yes, Guru, spirituality, do something which makes you and others better today and for future. Oh, that's an interesting take. Do something which makes you and others better today and for future. I like that. That's a good one, Guru. Okay. और बताओ. Then this is Arnav. He says spirituality means communicating to yourself, removing all world-made filters. Ooh, I like that. I like that.
communicating to yourself, removing all world made filters. Matlab, if I understand, Arnav, you're saying spirituality means going to your true self, who you really are, right? Without any pretense, any ढोंग, any type of facade जो हम दुनिया के लिए बना के रखते हैं कि जी मैं तो बड़ी फंडू इंग्लिश बोलता हूँ जी, मैं तो टेक्नोलॉजी का बॉस हूँ जी, वो सब छोड़ के at the end going to the core you, that is spirituality. I like that. So good one Arnav, very good, I like that. Okay, so that's good. I am here. Okay, Chetan says I am here in Dhanori in Pune. Where are you from? Pune? I am in Balewadi area यार. धनोरी तो दूर है थोड़ा यहाँ से. I think 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा. Okay, so let's start. Let me give you a little bit of my perspective about spirituality. So I think it kind of borders on what you guys are also saying, but my understanding and my current understanding of spirituality is that spirituality is a way of seeing things as they are rather than imagining them some other way. रिपीट करता हूं, इट्स अ वे ऑफ सीइंग थिंग एज दे आर, जो जैसा है उसको वैसा देखना, rather than imagining something else, which is almost very close to what Arnav was saying, right? That going to your true self. And to me, spirituality is about 3 things. First, accepting reality. जो सच्चाई है और जो सच की सच्चाई है, ऐसा नहीं जो दुनिया को दिख रही है वो नहीं. Accepting the reality as it is. Second, being less reactive. नी जर्क रिएक्शन नहीं मारने. किसी ने कुछ बोला, फटाक से जवाब नहीं देना. टेक सम टाइम, एब्जॉर्व, देन रिस्पॉन्ड. हो सकता है रिस्पॉन्स गाली हो फिर भी, दैट्स ओके, बट लेस रिएक्टिव. knee jerk reactions, also less reactive to what is going on around you, and which leads to the third thing, living in harmony. क्योंकि अगर आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई आज ये सिचुएशन है मेरी, और मैं हर एक छोटे बड़े सर्कमस्टेंस से एजिटेट नहीं हो जाता हूं, हर एक चीज से मैं एकदम नीजक रिएक्शन नहीं मारता हूं, आराम से करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई तो है, उसको भगवान बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, सुपर पावर बोल लो, कुछ भी बोल लो, देयर इज समबडी अप देयर हु इज वॉचिंग आउट ऑन मी, एंड देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस. सो आई बिकम लेस रिएक्टिव. That leads me to live in harmony. And it's basically about freeing up your monkey mind. Monkey mind पता है क्यों बोलते हैं इसको? Because अगर आपको बोलो कि आपका दिमाग don't think about a monkey, अब आप किसके बारे में सोच रहे हो? Monkey के बारे में, right? That's why it's called a monkey mind. Because ये monkey की तरह behave करता है. कभी भी स्टेबल नहीं है कहीं पे, हर जगह उछल कूद कर रहा है, हर जगह भाग रहा है, हर जगह jumping from one tree, one branch to the other branch, going from one thought to the other thought. This is just a monkey mind. So having some control or freeing yourself from the monkey mind, let it run wherever it's running. But I'm here to accept reality. I'm here being less reactive, and I'm living in harmony. And when you do all of this, that is when you return to your true self. कि भैया मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो यही कर रहा हूं, and I'm comfortable with what this is. This is my reality. If you like it, great. If you don't like it, all the best. So that is the essence of spirituality for me. अब एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देता हूं. ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन. अब एक टेक्निकल डेफिनेशन देता हूं स्पिरिचुअलिटी. Spirituality is like an abstract class, and it has several implementations depending on the phase
and the life situation that you're in. So base class is, let's say, draw. उस base class draw से आप एक फंक्शन डिराइव कर सकते हो कॉल सर्कल. यू कैन मेक अ सर्कल. उसी बेस क्लास ड्रॉ से आप एक हाउस बना सकते हो. उसी बेस क्लास ड्रॉ से आप एक सिटी बना सकते हो. बेस क्लास ड्रॉ है बिकॉज उसमें ड्रॉ कैसे करना है वो डिफाइंड है. आपको क्या बनाना है, उसमें कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है, कितना सिंपल बनाना है, क्या बनाना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. एंड दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. इट टेक्स यू बैक टू द बेस क्लास ऑफ ड्रॉ and enables you to create your own reality. And at starting, the reality can be a circle, a square, then it can be complex things, and then it can be a whole lot of other manifestations. So I'll take a pause here. Any questions? कुछ समझ में आया? Is it making sense? कुछ क्वेश्चन है तो बताओ. okay. अदरवाइज फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करना है. Okay. So Guru's question, how do you do that control? ये best question है. This Guru straight down to the basics. How do you do that control? So I never said control the mind. I said free yourself from the monkey mind. क्योंकि जैसे ही आप कंट्रोल करने लगोगे ना, वो कंट्रोल रेजिस्ट करेगा. Right? Anything that you try to control, the first reaction is resistance to control. So I said free yourself from the monkey mind. I didn't say control the monkey mind. What does that mean? Yes, आपकी थॉट जाएगी इधर उधर, आपका दिमाग घूमेगा उधर उधर. Be aware of that, accept that reality, and it will come back again. धीरे धीरे वो जो टाइम ऑफ कमिंग बैक है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. बट कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोल होता नहीं है. हम संत महात्मा थोड़ी है, हमसे थोड़ा कंट्रोल होगा. उसके लिए तो हिमालय में जाके कुछ तो भी करना पड़ेगा, वो हमको नहीं पता. तो कंट्रोल नहीं करना. ओके. सो द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इज, हैव यू डन मेडिटेशन? हैव यू एवर डन मेडिटेशन? यस, नो. So Arnav says yes. Agile Guru says yes sometime. Chetan says yes. मैं आपको एक चीज बताऊं. What is meditation? Meditation very basically is thinking about something or thinking about nothing. That's meditation. And I'll give you a challenge. We are all doing meditation all the time. Only we are not aware of it. मतलब क्या? कभी भी आपका दिमाग खाली नहीं बैठा है. राइट? आप कंप्लीट ब्लिस में विद जीरो थॉट, ऐसा तो कभी भी नहीं हो रहा है. आप या तो प्रेजेंट का सोच रहे हो, नॉर्मली 99% या तो पास्ट का सोच रहे हो या फ्यूचर का सोच रहे हो. राइट? तो दिमाग या तो पीछे है, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल वो कर लेना चाहिए था, मुझे 5 साल पहले पूना में इन्वेस्टमेंट की होती, 10 साल पहले, तो आज करोड़पति होता. किससे वन ऑफ दोस. या फ्यूचर में है, एक अच्छी जॉब मिल जाए, यहां से जंप कर लूं दूसरी कंपनी में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा. सो यू आर ईदर इन द पास्ट और यू इन द फ्यूचर. दैट इटसेल्फ, दैट स्टेट इटसेल्फ इज कॉल्ड मेडिटेशन. बट हमें उसका अवेयरनेस ही नहीं है. गुरु सेज होता है. जब मैं किशोर कुमार के गाने सुनता हूं, एब्सोल्युटली गुरु, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. करेक्ट. सो मेडिटेशन टू मी इज नॉट के ध्यान करने बैठ गए एक जगह पे और 2 घंटे बैठ के ध्यान किया. ऑफ कोर्स दैट इज मेडिटेशन, बट दैट टू मी इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. I'll give you some examples. What do I personally consider as meditation? Right? When you're deep at work, solving a technical problem, और आप अंदर घुसे पड़े हो, right?
कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कोई सिचुएशन सॉल्व कर रहे हो, कुछ डिबग कर रहे हो, डीप थॉट में विद फुल फोकस, दैट्स मेडिटेटिव स्टेट। बिकॉज आपको कुछ नहीं पता कि आधा घंटा हो गया है कि 2 घंटा हो गया है, आपको भूख भी नहीं लग रही है, आपको प्यास भी नहीं लग रही है, पानी भी नहीं पी रहे हो, आप कुछ नहीं, और कंप्लीटली फोकस्ड, डीप फोकस, दैट्स मेडिटेशन। व्हेन आई प्ले विद माय डॉटर, राइट, अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, 11 साल की, बट स्टिल व्हेन आई डू सम स्टफ विद हर, दैट्स मेडिटेशन। When I go out on a long drive with my wife, we have some nice music, सुबह का टाइम है अगर, तो अच्छी अच्छी हवा चल रही है, लोनावला के पास बारिशों के मौसम में जब आप जाते हो, दैट्स मेडिटेशन। सो टुडे आफ्टरनून आई वेंट आउट विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, पुराने कोलीग्स हैं जेंसर के, आई वेंट आउट विद देम, वी हैड अ कपल ऑफ बियर्स, दैट्स मेडिटेशन, राइट? बिकॉज उस टाइम आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर की बकचोदी कर रहे हो, आपको ना पीछे का स्ट्रेस हो रहा है ना आगे का स्ट्रेस हो रहा है, you are living in that present moment, right? That's meditation. Typically in the evenings, me and my wife, we make dinner together. To me, that is also a form of meditation, because we are talking to each other, we are cooking, both of us love to cook, we spend a lot of time in the kitchen. वो भी meditation है मेरे लिए। तो all of this is meditative state where you are in the present moment, you are enjoying it, ना आप आगे का सोच रहे हो ना आप पीछे का सोच रहे हो। Okay, does that make sense? Okay, let me take a pause, read some comments. Arnab बोलता है, I'm in pre-final year and my monkey mind is so much active. I do one tech stack and jump to another, due to which I am not perfect in one thing. It's a good question, Arnab. और मेरा ना इसका थोड़ा कॉन्ट्रेरी टेक है। ये ना हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग कर रखी है सोसाइटी ने, माँ बाप ने, टीचर्स ने, कि एक चीज उठाओ और उसको फोड़ डालो। जरूरी तो नहीं है यार। अभी आपका अगर स्विच हो रहा है टेक स्टैक, मे बी यू कैन लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, सेइंग दैट समबडी नोज ओनली वन टेक स्टैक, मुझे तो 3-4 स्टैक पता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं घुस के सॉल्व कर लूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है वो फंडामेंटली चलता कैसे है, मुझे उसके बेसिक्स आते हैं, मुझे उसके थोड़ी बहुत एडवांस चीज भी आती है, मुझे ये पता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, ढूंढना कैसे वो मुझे पता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन शायद ना पता हो, दैट्स ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाटएवर इज हैपनिंग, पहले तो उसका स्ट्रेस लेना बंद कर दो, उसको एक्सेप्ट करो कि मेरा मंकी माइंड है यार। दूसरा, हो सकता है आपको अभी तक आपके इंटरेस्ट का टेक स्टैक मिला ही नहीं, आप जबरदस्ती पढ़ी जा रहे हो, आपको करना कुछ और है, और आपने जी जावा पढ़ ली, सी प्लस प्लस पढ़ लिया, आपने एंगुलर पढ़ ली, आपने कुछ और भी कर लिया टेक स्टैक में, थोड़ा बहुत कुबरनेटिस पढ़ लिया, डेवऑप्स पढ़ लिया, मजा ही नहीं आ रहा किसी में। वो भी तो हो सकता है अगला टेक स्टैक आप मोबाइल में पढ़ लो एंड आपको आईओएस के ऐप बनाने में मजा आ जाए। लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मे बी जो चीज आपको इसमें से कुछ भी पसंद ही नहीं आया अभी तक, इसलिए आप टिके ही नहीं वहां पे, राइट? सो व्हाट आई वुड से इज, फर्स्ट accept the reality of what it is, then number 2, think about what is going on, think about why you are jumping. Is it because you're bored? Is it because peer pressure? Is it because मुझे मजा ही नहीं आ रहा कुछ करने में, मुझे कुछ तीसरा ही करना चाहिए? ये सब सोचो और फिर उसका आंसर निकालो। Okay, let's look at some comments. Okay, so now let's come back to our topic, which is how to implement spirituality in workplace. Okay, तो मुझे बताओ, तो पीछे से शुरू करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी था यहाँ किसी का, प्रवीण,
Praveen says, how can I implement spirituality during college life? Bhai? That's a good question. ये बताओ, if some of you are in college or just passed out of college, what are the challenges that you're facing in the college life? क्योंकि कोई चैलेंज होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए स्पिरिचुअलिटी यूज करेंगे ना. तो क्या है? एक दो चीजें बताओ, and then let me give this answer as well. Right? Till then, let me read some more comments and see if I've missed something. So, for those of you who are in college, tell me, or just out of college, so tell me what situation you're facing where we can potentially use spirituality. And then, if you are in the workplace, then tell me one or two scenarios when you think spirituality could have helped you in the workplace. गुरु बोलता है माई क्रश घास नहीं डाल रही है. इसके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं, इसके लिए जगजीत सिंह था या अरिजीत सिंह आजकल. उसके स्पिरिचुअलिटी क्या करेगी? गाने सुनो, ओल्ड मॉन्क पियो, सेट हो जाओ. सिंपल आंसर है इसका तो. गुरु अपने पुराने जख्म ताजे कर रहे हैं अभी. Actually, Guru, let me see if I can invite you. Okay. Why don't you come and join the stream, Guru? It'll be fun. Last time, मैं आपको ये लिंक भेजता हूँ and आप join करो. Just give me 1 minute. I think यहाँ से भी कोई तरीका होता है. Wait. Copy URL from the browser. Okay. एक second. Invite. Copy. Okay. मिल गया मुझे. 1 second. भेजता हूँ गुरु. LinkedIn पे भेज रहा हूँ गुरु. आ जाओ. There we go. गुरु LinkedIn पे मैसेज किया आपको. आ जाओ, ज्वाइन कर लो. Let's have some fun. Lots of interesting questions happening here. There he is. There he is. Hi Guru. हेलो. हाँ, वैसे वो जो कॉलेज की बोल रहा था वो अभी भी मेरी दोस्त है. सो उसने घास दिया तो मैंने घास नहीं दिया. नहीं, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके, वी गेट इट. इट्स फाइन. इट्स ओके. ओके. तो अच्छा, okay, let me ask you this question, Guru. What in the workplace, tell me one or two situations where possibly which could have been solved using some spiritual funde. See, people think that they want to do all the sexy jobs and the most interesting jobs. But there is something called execution then, or what you call innovation, and there is something called operations. Right? People don't want to do the operations bit. Right? Which is where your frustration comes and they say, oh, why am I doing the operations? Remember, don't get frustrated. Remember, operations is part of the business. That is how companies make money. Innovation is expensive.
operations is cheap and this is how they make money. So during some situations when you don't get the best of the work, don't take it out on yourself कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर जन के साथ ऐसा ही होता है. And the other one is, don't compare yourself with others. For example, there are some people who are exceptionally good in databases. जैसे हैना शुल्जा करके है, स्विट्जरलैंड की बंदी है. अरे यार इतना दिमाग है, वो बोलते हम लोग बैठ 2 घंटा बैठ के डिबेट करेंगे, वो 2 मिनट में बोलती है ये सब बकवास मत करो, ये इम्प्लीमेंट करो, हो जाएगा. Don't compare. Everyone has talent, everyone is different. Try not to over compare, and sometimes just get out of your desk. As Savinder said, कभी इतने घुसे पड़े रहते हो कि गलतियां करते रहोगे. कभी कभी ऐसा होता है 10 मिनट उठ जा, जाके सुसु करके आ जाए या पानी पी ले, टेंशन निकल जाएगा और फिर हो जाए अरे यार ये सिंटैक्स मैंने क्यों किया. So that's kind of like, don't get too much involved where you get frustrated. That's where you should kind of step back and say, I think I need a break and I need some spiritual break or something like that, and say, yeah, chai break. Yeah. No sutta break, please. That's a bad idea. Chai break, coffee break, pani break. That in terms of spirituality, right? This is just to not think too much and then इसका solution Google search करो, ChatGPT में डालो, Brad में डालो, या फिर इधर करो वो करो. Don't try to do monkey. Just step back and say, why is it not working? I'm sure most of the people here, the best ideas comes when you're taking shower. Or shit. I don't want to use that word, but yeah, it's reality. सब करते हैं उसमें क्या है? जब fully relaxed रहते हैं ना, जब मेरे घर में ना, one thing I have is power shower. Okay. Full pressure में full temperature control to the degree तक control कर सकते हो. तो जब 50 डिग्री का गर्म पानी लगता है ना, तो दिमाग में और कुछ नहीं होता है ना, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं. तो जब भी फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तो, और जब ठंडी के जैसे अभी है, तो जाके गर्म पानी के नीचे बाकी बैठ जाने का, बस अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं. तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ spirituality. I'm not sure it's spirituality, but it makes me tick. No, it is. And what I've learned is, like Guru said, right? अगर किसी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, and let's say शाम हो गई है, रात हो गई है, just one of my earlier bosses used to say, when you have a big enough problem, sleep over it. Since sleep over it मतलब literally सो जाओ, आधे घंटे का नैप ले लो, 15 मिनट सो जाओ. बेस्ट है रात को सो जाओ. आपको लग रहा है आप सो गए हो, लेकिन आपका दिमाग फिर भी काम कर रहा है. वो सबकॉन्शियस लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, कुछ तो ढूंढ रहा है, कुछ तो कर रहा है. और सुबह आप उठोगे, आपको सडनली चमकेगा, अरे ये कर देते हैं, अरे ऐसा कर देते हैं, कुछ तो आइडिया आएगा. दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग, राइट? सो ट्राई दैट. इफ यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम, sleep over it, literally sleep over it, or just leave it for half an hour, 1 hour, 2 hours. कुछ और कर लो. काम ही कर रहे हो तो कोई दूसरा टॉपिक पकड़ के कुछ और काम कर लो, या बेस्ट है ब्रेक लेके कुछ और कर लो आधे 1 घंटे के लिए. एंड देन व्हेन यू कम बैक, सडनली कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा. तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? आपने वो जो थ्रेड है ना, वो पीछे डाल दिया है. वो थ्रेड किल नहीं हुआ है अभी भी. सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम कर रहा है, लेकिन थ्रेड बैकग्राउंड में चला गया है, राइट? बट द थ्रेड इज स्टिल अलाइव, इट्स स्टिल वर्किंग, एंड यू आर एक्सेसिंग योर सबकॉन्शियस टू सॉल्व दैट. बिकॉज शायद आपने वो प्रॉब्लम 6 महीने 1 साल पहले सॉल्व की थी, या आपने स्टैक ओवरफ्लो पे पढ़ा था कि अरे इसके जैसा करने तो ऐसा होगा, लेकिन वो रेडी नहीं है अभी दिमाग में, वो पीछे है कहीं. तो वो थ्रेड धीरे धीरे जाके वहां से प्रॉब्लम लेके आता है, सॉल्यूशन लेके आता है. That's the technical explanation of that. But that happens. आप कैसे करते हो? क्या? कहीं चीज में अटक गए तो? मैं तो ब्रेक ले लेता हूँ, कुछ और करता हूँ. यही सेम चीज. खाना बनाते? हाँ, खाना तो मोस्टली डिनर तो मैं और मेरी वाइफ साथ में ही बनाते हैं. बट आई टेक अ ब्रेक. या तो काम ही करना है तो वो टॉपिक छोड़ के कोई दूसरा काम पकड़ लेता हूँ, वो कर लेता हूँ. नहीं तो थोड़ी देर का ब्रेक ले लेता हूँ, बट छोड़ देता हूँ उस चीज को.
और फिर जब वापस आता हूँ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, सोल्यूशन नहीं तो एक हिंट तो मिल ही जाता है कि यार इस डायरेक्शन में जाके देखते हैं, हो जाता है. अदर वन मोर थिंग विच आई ऑफन ट्राई इज कि मैं किसी और से वो प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया. अगर मुझे पता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं पता है तो भी, क्योंकि जब मैं अपने दिमाग में वो प्रॉब्लम रिपीट करता हूँ ना 2-3 बार, तो मुझे ही लग जाता है अच्छा अच्छा मिल गया सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच, चल बाय. You need to find what we call a crying shoulder साउंडिंग in बोर्ड, your office. या अ साउंडिंग बोर्ड, या. So ऑफिस में कोई ऐसा बड़ी पकड़ो यार, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. तो बोलेगा करेक्ट. तुम, हाँ, वो बोलेगा क्या प्रॉब्लम ये है? अच्छा तूने ये करके देखा क्या? हाँ कर दिया. वो कर दिया क्या? हाँ. फिर भी नहीं आया. हाँ ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा सिचुएशन हो सकता है? बट हम लोग ये 1-to-1 में करते हैं, पब्लिक में नहीं. No, no, this is one to one. हाँ, Of course, this this is is one to one. 1-to-1. हाँ, Yeah, this is because one to one. remember, doing it in public also is not a good idea. Remember, every other person's time is also important. It's not about Yeah, only you also. yeah. So for example, हर बार मैं अटक गया तो सविंदर को बुलाऊंगा तो फिर वो मेरे आपके चैनल पे नहीं बुलाएगा, चल बक्सा लेकर बोलेगा. Correct. Yeah. So that's what it So is. आपकी लाइफ में 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आप कॉल करके उनको साउंडिंग बोर्ड बना सको. And if you can find those people, it will be amazing. Exactly. Yeah, for anything, technical, personal, कुछ भी होने चाहिए लोग कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा डिस्कस करते हैं. कुछ तो हो जाता है. ओके, अर्नब बोल रहा है आई रिवाइंडेड वीडियो वेयर यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, यू ब्यूटीफुली आंसर्ड माय क्वेश्चन. अरे इसने लाइव में ही रिवाइंड कर दिया. सही है यार. थैंक्स अर्नब, थैंक्स यार. ओके, गुड. अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है, नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. वो पीछे वाला आपने खुद बनाया क्या? नहीं, बनवाया है. अच्छा अच्छा. हाँ. नहीं, मुझे आप टैलेंटेड हो मालूम है. अरे लेकिन इतना भी नहीं यार. नहीं, नियॉन बल्ब तो काफी इंट्रिकेट काम होता है, राइट? हाँ. देयर इज अ साइट कॉल्ड ग्लो साइंस, वहां से मंगाया था. अच्छा. बट जब आया तो जल नहीं रहा था. वो आई थिंक शिपिंग में डैमेज हो गया, तो उसका सोल्डर करके फिक्स मैंने किया. उतना क्रेडिट मैं लेता हूँ. गुड गुड. एक्चुअली सिर्फ हाथ ही जल रहा था, वो टेक्स्ट नहीं जल रहा था. तो उसका खोला सर्किट वर्किट, एक तार निकली हुई थी, फिर उसको सोल्डर किया, वो किया. एक्चुअली कहाँ गया? नहीं, क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, मुझे ओरेकल ने एक सर्वर, हाँ ये रहा. ये क्या? ये ओरेकल कॉर्पोरेशन ने मुझे एक सर्वर किट भेजा है जिसमें तुम बैठ के इतू सा सर्वर बना सकते हो, छोटी, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ रास्पबेरी पाई. रास्पबेरी पाई टाइप्स. हाँ, रास्पबेरी टाइप पाई. एंड दे सेंड इट टू मी सो दैट यू कैन लिटरली असेंबल इट इन अ बॉक्स. ये रहा. ओह नाइस. Yeah. ओके. और वो मदरबोर्ड टाइप सब भेजा है. हाँ, मदरबोर्ड एंड ये कवर, सॉरी, ये देखो, ये कवर है. एंड ये देखो, और फॉर द सर्वर किट को एक रैक में डालने के लिए जो छोटी छोटी वर्चुअल रैक जो बोलते हैं ना, उसको डालने के लिए. अरे बहुत अच्छा था. मींस इफ यू गो टू ओरेकल DevRel एंड सर्च फॉर इट, दे विल सेंड इट टू यू. ओरेकल DevRel? हाँ. Okay. They will send you a kit which you can do to create like PCB, अलाना फला, दुनिया भर के ऑप्शंस रहते हैं, चेक कर लेना बाद में. ये देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो. हाँ. Oh, interesting. So just try it out. They sometimes
send a heck lot of stuff. मैं भी दिखाता हूँ फिर, अब सब दिखाई रहे तो मेरा भी हाँ। देखो, ये भी ओरेकल का ही है, अच्छा, कोड कार्ड। कोड कार्ड ये क्या है? ये एक ये लंदन में एक कॉन्फ्रेंस था कोई, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वहां से मिला था ये। हम्म। So basically it's a coding card, you connect it to a Wi-Fi connection, हाँ okay, and इससे प्रेस करके you can program your name or some text on this. हाँ, वाह, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करता है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही। और ये बाइनरी कोडिंग है, अरे तो इट वाज गुड फन। मतलब उसने हम्म, ट्यूटोरियल दिया था, एक बंदे ने, एक वेबसाइट था, वहां जाके हम्म, इसको वाईफाई पे कनेक्ट करो और कुछ एक आई थिंक 5 कैरेक्टर्स और कुछ तो ये डिस्प्ले करता है, हम्म। गुड फन। And then, yeah, too much stuff in my box. नहीं, कहाँ गया पता नहीं. And my manager sent me something called a Pi Hut. पाई हट, Pi Hut करके है वो. ओके, न्यू ईयर स्लैश एडवेंट कैलेंडर थीम था, जिसमें हाँ एक दिन हाँ, खोला तो एक पीसीबी निकलेगा, उसमें तुम ये बनाओ, एक पीसीबी ओके, खोलोगे तो वो बनाओ, अरे सही कुछ बेचते रहते. ओ नाइस, या इट नाइस, वाज वेरी गुड थेरेपी. बोलते हैं कि साल भर काम किया है, हाँ नाउ इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड हाँ, डू समथिंग एल्स. ओके, लाइक ओके, सॉफ्टवेयर में घुसे पड़े हुए हो, कभी कभी सर्वर पे जाके सोल्डरिंग करना, हाँ पीसीबी हाँ, में घुसाना, क्योंकि यू करेक्ट, नीड टू समटाइम्स गो बैक टू द बेसिक्स. या क्लाउड में तो तुमको टेराफॉर्म सब बना अप्लाई करो, बनाया है, हो जाता है. कुछ हाँ, करना ही नहीं है, करेक्ट, ना कुछ करना नहीं है तो. बट करेक्ट, समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स वर्क. हम्म, सो या इट वाज लाइक, मुझे समझे यार ये पैसा क्यों बैठ के वेस्ट कर रहे हैं करके. रिमेंबर इट वाज हाँ, सेंट टू लॉट ऑफ पीपल, लाइक अराउंड 100 people. So ओ it ओके, would have cost them 100,000, not राइट, 100,000, maybe. uh, yeah, 100 into 100 is 100,000, right? Yeah. 100,000, करेक्ट, हाँ, 100,000 euros तो आराम से लग गया होगा. वाओ, सबको भेजा, बोले तुम जो करना है करो. बनाओ, हाँ, तो हम्म, but the reason I'm showing this is sometimes just get out of your normal routine and rut या बोलते हैं या जिसको, and then try या to do. Whilst you're doing this, your subconscious mind will say, hey, उसका solution वो था. हाँ, करेक्ट, करेक्ट, तो वो स्विच हो जाएगा एंड क्योंकि प्रेशर नहीं रहता. करेक्ट, हम्म. एंड गुरु, टू योर अर्लियर पॉइंट ऑफ ऑपरेशंस, हम्म. राइट, तो I know a lot of people who are in very successful DevOps positions now हम्म. who come from an operations background. Exactly. And the reason they are successful is because they have the battle scars of operations. Exactly. Right? उसके घाव हैं, उसको पता है क्या होता है. हम्म. और अगर आपने वो मार नहीं खाई है ना, अगर हम्म. आपका सर्वर नहीं डाउन और 3 लोग यहाँ पे खड़े होके देख नहीं रहे कि तुम क्या कीबोर्ड पे एक-एक की क्या टाइप कर रहे हो, और तुम्हारी ले नहीं रखी है किसी ने, तो आपको नहीं समझ में आएगा ये सब। हम्म. तो What they वो say is, yeah, हाँ, वो it's very मुझे लगता easy. है वो जेल टाइम जो होता है ना, वो सबको करना चाहिए, वो ज़रूरी हाँ, होता है। हाँ. और as they say, uh, number one, you learn from your mistakes, हुँ, and you definitely will know what not to do. या, करेक्ट, हाँ, RF करेक्ट। माइनस RF कभी भी एक्सक्यूट मत करना. स्लैश होम मारने के बदले में स्लैश में एंटर मार दिया गलती से तो लग गई चाहिए. हो गया। इसलिए हमेशा आई मारने का, इंटरैक्टिव रखने हुँ, का, नहीं तो नहीं. हुँ, आरएम आरएफ तो करने का ही नहीं. अगर करना भी है तो पहले आई दबाओ, बाद में हुँ, कुछ भी टाइप करो, इंटरैक्टिव कर लो. Or else अ, make a backup, or else या, it will give you a lot of. And the thing is, make sure that you, if you're doing some very important application development, especially for medical, हुँ, that get it reviewed by at least 2 other people. हुँ, Because remember, if you're doing it for manufacturing, fine. But if you're doing for medical, remember, a simple mistake can hurt you and a potential
human being. Let's put it that way, Yeah. or Yeah. a living being, not being human being. It can be on animals too. So just be careful on what you do. Yeah. Okay. I'd got a very interesting question on LinkedIn, I think yesterday. So I want to hear your take on this, Guru. How do I select the right institute for DevOps training? Do you have any recommendation? अब बंदे ने ये कोर्स और कुछ नहीं बताया, but Hmm. this was the question, and I said, hey, this is not a one line answer, it's a thought process. Hmm. Come on the live and listen to it. So I don't Hmm. know if that person is here or not, but नहीं भी होगा तो बंदा recording Hmm. देख लेगा. So what's Hmm. your take on this? I know a very good university which does that, right institute. It's called YOU. Okay, can you You are tell the more right about this? institute. YOU. You are the own institute to do that. Okay, why do you say that? Okay. Not many people know that my schooling was very bad. I was very good student till I was in Delhi. क्योंकि उधर सब हिंदी चलता था सब लोग में I was born in Pune, so everything was good. Suddenly, my dad got transferred to Chennai. First, I didn't know Tamil. Number two, I hated the heat. Right? So I didn't like it. And I had to take long bus to go to school, which was painful. So I did very bad in school. Yeah. But then I did very good at university and got a job. There I realized that only you can build your own career. No one else is going to waste their time on your career, which includes training. So whilst I was working, I also learned other things. For example, I'm sure this person, whoever has put in the question, is expand your skills. That's what I mean. So learn. See, no institute will give you the practical know-how, as they call it. You have to learn by practice and looking at how other people have implemented, and then do the training. My suggestion is also look at trainings provided by the cloud providers vendors itself. Don't go to, I'm not saying don't go to the institute. Institute may give you some basics, but for real world example, scenario based, my suggestion is learn by yourself, university, YOU university, and also ask people for good training courses, which is provided by AWS, GCP, Oracle, and even Azure. They have some fantastic training sessions which doesn't cost you much. Most of the time it's free anyway. So you should definitely, and recommendation is practice makes the man perfect. So practice, learn something, become adept. You don't need to become an SME, but become adept in it and don't do the monkey jumping. Be this thing. For example, I was learning GitOps. For that 1 week, nothing else. GitOps, install, ye nahi ho raha, but you still don't go and GUI and click. No. GitOps is GitOps. So do everything in Git, deploy. And once I knew that I had a major design fault, I removed everything, fixed the design, put it in development, and made sure that when you upgrade, there is no outage. So this is how you learn. Yeah, man, ऐसे वो क्यों नहीं सोचा? And don't curse yourself. Everybody has their first time. I'm sure we have made mistakes, but there is nothing to be ashamed of. In tech, control से तो आराम से कर दिया जाता है. This is not Yeah, hardware. I hope I answered a good one. I think so. So my take on this institutes is figure out what you want to do, right? Exactly. Which means if you want to learn the basics and level 0 pe ho aap, then maybe institute is a good idea to get you started, to give you introduction, right?
एंड उसके लिए सिंपल है, talk to the person who's taking the course, make sure they're doing practicals, it's not just gyan, and look at what kind of projects they are creating. अभी आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्ट समझ में तो नहीं आएगा, बट आस्क द पर्सन कि मुझे प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बता दो, हैव अ गट फील। और बेसिक्स के लिए इतना काफी है, दिस इज गुड इनफ टू जज एन इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट द इंस्टीट्यूट, इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी टीचिंग यू। एग्जैक्टली। उसकी भाषा समझ आ रही है, बंदा रिलेटेबल है, उसकी टेक्निकल नॉलेज आप जज तो कर नहीं पाओगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछो, वो जिस तरह से आंसर कर रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दैट्स गुड इनफ। दैट्स फॉर बेसिक्स। इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग एडवांस्ड, then I think probably institutes are not a good place, because advanced तो कोई सिखा नहीं सकता आपको। There are a lot of YouTube channels out there which you can go or pick up specific courses for this, और वो hit and trial है, right? खुद कोशिश करो एक। so basically figure out what problem you're trying to solve। अभी मुझे Ansible सीखना है, राइट? तो पहले तो एंसिबल होता क्या है, करता क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये तो आप गूगल में उंगल डाल के निकाल लोगे, इतना समझ लो, राइट? अभी एंसिबल मतलब डब्बे बनाने हैं, VMware पे बनाने हैं या क्लाउड पे बनाने हैं, इतना अगर समझ में आ गया तो कैसे बनाते हैं, उसका एक वीडियो देख लो कहीं पे, जस्ट ऑन हाउ टू क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस, उसका देख लो, वो बन गया, फिर उसमें नेटवर्किंग कैसे डालते हैं वो देख लो, फिर उसके अंदर 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 घुसते जाओ, उसमें एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख लो। तो यूज केस बेस सीखो, क्योंकि आप पूरा एंसिबल पढ़ने लग जाओगे तो 1 साल उसमें ही लग जाएगा, और तब तक आप क्यों सीख रहे तो वो भूल जाओगे, राइट? तो फिगर आउट कि क्या सीखना है, कितना सीखना है, बिकॉज पूरा सीख के अगर इंटरव्यू देनी है वो अलग टेक्निक है, इसलिए सीखना पहले ये फिगर आउट करो, क्योंकि हर एक एरिया इतने बड़े हैं कि हर एक में 1-1 साल लग सकता है, और आप 10 साल खाली सीखते ही रहोगे, और जब तक खत्म होगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो थोड़ा ध्यान से। Exactly. And also, once you are do step by step, पहले मिर्ची काटो, फिर धनिया काटो, फिर अदरक, फिर प्याज काटो, साइड में रख दो। फिर मालूम है आज सांभर बनने वाला है, अरे इसके लिए तो ड्रमस्टिक चाहिए, तो ड्रमस्टिक लेके आओ। एंड देन practice once, you will get error, but please don't serve the first sambar you made to any guests. Taste it yourself. Make sure that you test it not in production for sure. And then also look at best practices. ये सोचो कि इस कोड को मैंने किसी को दिया तो वो कितना स्वेरिंग करेगा। अगर वो तुमने किसी को दिया, बोला यार तूने बहुत सुंदर कोड लिखा, अच्छा कमेंट लिखा है, और कुछ मॉडिफाई करना तो सिर्फ ये चेंज करना है, सही कोड लिखा है, then you should be proud of yourself. Don't do it for generic, because then you won't be able to differentiate. Think about जो तुम डेवलप कर रहे हो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? That would be my thing. And make sure that you do your work well. Don't cheat, because once you cheat, you're not cheating the other person, you're cheating yourself in tech. That's for sure. Yeah. So another question, Inderjot Singh says, anything about MLOps? What's your take about MLOps? Okay, my expertise in MLOps is very less, so I'm going to be very opinionated. I have not seen an MLOps use case where it has been implemented to a high degree of success. Trust me, the company I work for has more than 3,000 customers worldwide. And some of them are starters, some of them are mid-sized business, and some of them are banks too. ML Ops is in its infancy. So just be careful, and remember, anything to do with machine learning and to do LLMs, you need very expensive hardware.
If you have only $2,000, forget about it. And also remember, ML ops should not be used on a small, even if you have $1 million with you, don't use ML ops on a small estate, as they call it. If you have only 20 servers, don't use ML ops. Your brains is far, far, far faster than that. But if you have 2,000 machines and your business critical, time critical, and you have to be on the toes, then ML ops is good. But it's not the problem is industry has this bad habit of interpreting everything good and bad. Most of the people think that machine learning is nothing but monitoring, putting grafana and बना दिया और वो ML ops हो गया. ऐसा नहीं होता. ML ops also should help you not make the decision. It should help you choose the decision. ये करना तुम choose करो. It should not make you फिर ये कोड के साथ फिर मैं ग्राफाना में ये करना है नहीं. It should give you the tool and say either you can do this, either you can do this or do this. Now it's your call. And remember, no amount of ML or AI can replace a human brain. No, not yet, at least, for sure. It can do a lot of computing, but it cannot make the decisions. No, can't. That would be my answer. Okay, perfect. All right. I think we can take one more question, which had also come on LinkedIn. I'm going to put it here. I thought it was a very interesting question. So this was somebody, a lady, I think from New Zealand, if I remember. And she said that she has limited technical skills. And her company has outsourced work, DevOps work to some SIs. And she has an opportunity to become a manager. As in, those people can potentially report to her. The DevOps team can report to her. And that transition will happen in maybe a quarter or so. So she has time. So her question was, I am not very technically sound. So what do I need technical skills to be a DevOps manager? And if yes, what and how much should I learn? Because potentially I'm these one part of these SI DevOps teams is going to report into me. Okay. If my answer, if she comes to me directly, I would say not immediately. Take up the job. Number one. Number two, remember, DevOps is not only technical, maybe 50% or even less. Most of the time, I don't want to curse the industry I work for, but most of the time people only think the how bit. How to do it. DevOps is how to do it. No. Think why we do it. People don't think that most of the time. I want to implement DevOps. For what and why? I'm going to spend 3 months just to automate a server provisioning for a software which will not even lasting for 2 months. What's the point? So you have to understand the what and the why. And one of the things which DevOps looks at is something called the DORA metrics. DORA metrics, which has the lead time and a lot. Just find out whatever it is. So you can take an action as being the manager, you are also a leader. You don't need to do everything. No, that's the point. You are a manager. You don't need to do everything. If you're a football manager, you tell people, hey, this is what I want. Please go to the pitch and do it. For example, Pep Guardiola doesn't tell Kevin De Bruyne how to take a free kick. He will just tell him, take the free kick and put in the ball into the goal. That's it. Yeah. And if he doesn't do that, he's sidelined. That's it. I'm not telling you to be that ruthless, but
The thing is, you don't have, you need to look at the why part and the how part and have a strategy. Yeah, exactly. Thanks very much. And try to get the outcome and empower your team. The problem is, don't become a manager and become a bottleneck and say, hey, this one. And then track it in a lightweight manager. And once you do that and look at the solution they provide and ask them, hey, you have done, how did you do that? What was your thinking? Can you coach me as well? The problem is, most of the managers think that they need to tell other people what to do. They don't want to take some knowledge from their juniors, as they call it. That's not the case. DevOps actually tells you that you need to open up your mind and take bottom up approach, as they call it. Top down approach is needed, but bottom up also is needed. So if I was her, I would take the opportunity and learn, and also align this to the business needs. Remember, technical is only 50%. You have to align that DevOps thing to the outcome. Because if you go ahead and do and DevOps something which doesn't bring value, even the best software is kind of the waste, right? Yeah. For Yeah, yeah. example, if I come to Pune and go to Savinder's house, I'm expecting quite a good number of bottles, obviously, uh, and definitely one or two chickens for sure. But I cannot expect him to have reindeer blood soup, which is because, or spotted deer, because it's illegal. So don't expect. So have realistic example, but that doesn't mean that I should not, because he's not giving me reindeer blood soup, doesn't mean I should not go. Go and find out and have a good time. The ultimate aim is not to go and have food, which is part of the job, but the time is being good. So look at the outcome first. Am I getting the outcome? Whether you can always learn. Computer science is easy. That's my view, though. That was a good, well-timed pause there. Okay, I think my take on this aligns with what Guru's saying. I would say, think of it this way: your job is not to be a better DevOps engineer than those guys. As a manager, that's not your job. They will be able to do the DevOpsy things much better than you are, and that is perfectly okay. As long as you understand what needs to be done, how is their problem. You don't have to be better at how. You have to be bloody good at what they are doing and why they are doing it. And are they doing what they're supposed to do, and is it giving them the right results? As a manager, that's your job, and that DORA metrics, measurement, ये सब उस area में आता है. And technology definitely पढ़ लो, but उतनी पढ़ो जितनी जरूरत है. क्योंकि आपको जाके कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप नहीं करना है एज अ मैनेजर, और करना भी नहीं चाहिए. उनको करने दो, उनका काम है वो. क्योंकि आप कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर लोगे, वो डोरा मैट्रिक्स नहीं कर सकते. Right? So that's my answer. I think we have run out of time, but we have one last question from Chetan. Says, can you suggest something that helps people facing layoffs, pay cut, no increment with spirituality? So, Chetan, it's a good question, and it's very easy to say कि स्पिरिचुअल हो जाओ, मेडिटेशन कर लो, सब ठीक हो जाएगा दुनिया में. लेकिन जिसका ले ऑफ हो गया है, उसी को पता है कि क्या चल रही है उसके दिमाग में. राइट? जिसका पे कट हो गया है, we all have tendencies to raise our level of living to our salaries. So pay cut is a difficult thing. All these situations are difficult situations, right? And there is no easy answer to that. There's no point saying 1 घंटा रोज मेडिटेशन करो सब बढ़िया हो जाएगा. नहीं होता है.
राइट? जिसका जॉब चला गया और जिसके बैंक में 3 महीने के पैसे हैं, उसकी फटी है, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो सिल्वर बुलेट, राइट? द सेकंड थिंग इज व्हाट आई स्टार्टेड फ्रॉम, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन कि भाई हाँ, आज चलो चली गई या पे कट हो गया मेरा, क्यों हुआ? थोड़ा सा उस पर थॉट, कुड आई हैव डन समथिंग टू सेव इट? Was it my mistake? Did I not learn enough? Did I take panga with some guy? Am I not, is my social skills not up to the mark? कंपनी में बैड टाइम आ गया है, इकोनॉमी डूब रही है, इसलिए आई डिड एवरीथिंग राइट बट आई गॉट ऑन द रॉन्ग लिस्ट। वो भी होता है, राइट? नन ऑफ योर फॉल्ट, but the organization is not doing well. They had to cut some people and you came in that list. It doesn't mean always you're a bad performer. Things happen in the industry. So firstly, accepting that. Secondly, seeing where you are now, what can you do about it, right? Which means first you accept, because unless you accept, you cannot go to the second step. आप फिर वो फ्रस्ट्रेशन में उल्टे सीधे काम करोगे, because you have to make sure the job that you take up at least is good enough for you, unless it is a dire situation. I'm leaving that for aside for a minute. You should not land up in a bigger soup. So first, accept where it is, where you are. Second, figure out what are the immediate steps you can do. Can you reach out to some people? Can you learn some things? What are the skills that you are lacking in the market? How can you quickly upskill yourself? Can you apply in parallel to doing this upskilling? Because time nahi hai aapke paas. You have to figure all that out. And then the last and the most important thing is a belief that things will work out. क्योंकि वो अगर नहीं है ना कि हाँ ये ब्लिप आया है, हाँ लाइफ में ऐसा पंगा हो गया है, लेकिन आई विल बाउंस बैक बिकॉज आई हैव ऑलवेज बाउंस्ड बैक इन द पास्ट ऑल्सो। लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है, मैं आ जाता हूं बाहर, इस बार भी आ जाऊंगा। इफ यू ऑपरेट विद दैट बिलीफ तो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। बट इफ यू लेट दैट सर्कमस्टेंस हिट यू और रोज कैलेंडर देखते रहोगे कि आज यार 2 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 4 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया कुछ नहीं हुआ, फिर जो होने वाला होगा ना वो भी शायद नहीं होगा, क्योंकि आप जो वाइब्रेशन फेंक रहे हो वो ड्रॉप हो गया है। एंड दिस इज नो रॉकेट साइंस, दिस इज बेसिक फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, बिकॉज द वाइब्रेशन एट विच यू ऑपरेट, दैट्स द वाइब्रेशन दैट यू अट्रैक्ट। So the moment your vibration decreases or lowers down, which means आपको डाउट आने लग गया है कि अरे यार वो बंदे का 6 महीने से नौकरी नहीं लगी, उसकी तो बहुत ही अजीब नौकरी लग गई, पे कट हो गया 50%, वैसे वाले थॉट, या ये गार्टनर पे आर्टिकल आ गया कि इंडिया में तो इस साल 25,000 जॉब निकाल रहे हैं, कल कॉग्नी ने 10,000 फायर कर दिए, ये सब अगर पढ़ने लग जाओगे तो वाइब्रेशन ड्रॉप हो जाएगा, तो जो आने वाले हैं अच्छी चीजें वो भी नहीं आएंगी। सो बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, बट कीप योर वाइब्रेशन हाई, मेंटेन पॉजिटिव थॉट्स एंड डू द वर्क बिहाइंड इट, accepting your situation where you are. And that is how I have come out of tough situations. I'm sure Guru has done something similar. We all have gone through shit in life. सबके पास होता है। ये मेरा एल्गोरिदम है and it has worked for me in the past. I'll give a different perspective on that. Sure. I was lucky to have a very good manager in my first career who was a Zansarian. I'm sure Savinder knows Himanshu Patra. So no, I think he left before he joined. So one thing is, only you can take care of your career. Remember that. No one else can. My policy always was 3 things. One is finance, second is tech, and third is your happiness. Okay, I'll come with the third one first because that's what matters.
I'll tell you, there are multi-millionaires or even billionaires who are not happy. Okay. For example, Mr. Jeff Bezos, who is among the richest person. His wife left him and married a college professor. He had all the money. Number two is your technical knowledge and see whether I have money or not, or have a job or not. I make it sure that I study for 2 3 hours a day because you're keeping improving. Technically, I don't need to, or I can even retire now and do what the heck, sit in my beach house in India and do nothing. That's not me. And third is, or the first one, which I came as first, I'm telling last because we have run out of time, is finance. One of the things we as Indians, even though I live in England, I'm still Indian by my virtue. We try to imitate what Westerners do. Remember, if something happens to me, let's say financially, I'm in shit creek, there is government who will provide me food, they will provide me shelter, they will give everything because my daughter is still a student, they will provide her all the means she needs. That is not the case in India. So don't try to imitate something which is happening in Western country. I'm earning 100 rupees, I'll spend all the 100 rupees. Don't do that. See, I'm in a comfortable position at the minute, thank God. But then I don't go out and buy Tommy Hilfiger t-shirts. No. This t-shirt most probably is less expensive than all the people who are listening to this channel. It's exactly 800 rupees actually. In 8 pounds it is. But I tell you, it is the most comfortable one. Yeah. And number two is I have some set of rules that if I earn 100, I will definitely spend 75. Don't be a conjuice or a miser, as they call it. Then you will not enjoy your life. Number two is save 10% for your retirement, 10% for your wife, and 5% for ad hoc. You don't need to spend it in a monthly. Just keep saving, and when the time comes, go. Yes. And what happens is I always have something called thresholds. Let's say if I have, if let's say if I'm earning 100 and my threshold is, I will say I will always have 20 rupees as the minimum threshold. उसके नीचे गया, बाहर भी नहीं जाना, घर में चुपचाप दही चावल खाओ. Then I come to something called 40, where 40 means I can go to restaurant once in a month, or go for an outing or something, go for a car drive, go to Khandala, or maybe do something. If I have 60, then maybe go to a holiday outside your country. But don't make it to go above 100 by saving everything. Because then you will get like, यार मैं इतना पैसा कमा करके कर क्या रहा हूँ? So my suggestion is, according to your threshold, keep it going like a small up, and make sure that if you are a person who has more than 5 to 10 years, 5 years experience, you should have enough bank balance to at least secure you for next 6 months with the current lifestyle you have. 6 months. 6 months is just the bare minimum. If you like a multimillionaire like Savinder who doesn't care, then I'm sure he will have like for maybe 30 years or something. Yeah. Going on 50. Going on 50. Yeah, exactly. So my suggestion is, jokes apart, have minimum for 6 months threshold. Like if you are spending, like say, $100 a month, save 600 should be kept separate as your emergency fund. Tomorrow, if I lose my job, I have 6 months. In 6 months, definitely you will find a job. That would be my approach. So once your food and your kapda and your lafda is there, everything else will happen.
because once you start to feel sorry about yourself, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, दारू मारने के लिए नहीं है, then the depression will come and you will not learn and you will not be enthusiastic. So save that money. And as I mentioned, these three are related, by the way. Also enjoyment and your happiness. I've been very lucky. The only time I did not have a job was 3 months in this 22 years. And that was intentional क्योंकि मेरी बिटिया ने मुझे, she was 10 years old. At that time, I was working for the European government and I used to travel a lot. Every Monday morning flight, come back on Thursday, work from home on Friday, then take a flight again. For 3 years, I was doing it. And then one day she said, Daddy, you're spending a lot of time. We can cancel one holiday, but can you stay and work from home? I mean, she's telling, Abe gadhe, पैसा सब कुछ नहीं होता, घर से काम कर, तू मेरा बाप है, ठीक है, चुपचाप घर में बैठ ले. उसी दिन जॉब छोड़ दिया मैंने और बोला कि नेक्स्ट 3 महीने मैं तेरे साथ बिताऊंगा और जॉब में लोकल. आई वॉज लकी एनफ दैट आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई बिकम हेड ऑफ डेवऑप्स फॉर वोक्सवैगन ग्रुप एंड बोला कि तू कहीं से भी काम कर ले. सो समटाइम्स you need to plan, what we say, hope for the best but plan for the worst. It's very simple. It's all common sense. Try not, see, you may find it a bit ironical that we are trying to emulate Westerners and Westerners are trying to emulate us. Exactly. वो बोलते थे तुम्हारा कल्चर, तुम लोग इतना सेविंग करते, तुम्हारे पास पैसा आता कहाँ से? आता नहीं है, हम जमा के रखते हैं. Right? And this is where you need to control yourself a little bit. Means, I don't want to expand again, but if you want a life's perspective, please come to England and go to my wife's hospital for a day. Not even a day, just spend 2 hours. हम लोग बोलते ना मेरे पास नाइकी शू नहीं है, मेरे पास मोटर बाइक नहीं है. उसके हॉस्पिटल में किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना, एक्सीडेंट में जाके सर लगा, ब्रेन इंजरी हो गया. She or he cannot talk. They are multi-millionaires. बोलते हैं मेरे पास इतना पैसा, मगर मेरी just make my child talk. That's what I want. So be in perspective. बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास शूज नहीं है, बाइक नहीं है. बहुत लोग के पास ऐसा है जिनके पास पाँव ही नहीं है. So think about that. Yeah. So please don't feel sorry for yourself. There is a reason behind it, and make sure that you work towards it and be proud of what you do. Like, for example, I don't have any shame asking Saminder what to do and vice versa. We don't. Do we think what other people will think? No. काम करना है, काम हो गया क्या, और जाके उसके घर आऊंगा तो बोलूंगा भाई खंबा चालू कर दे. Right? That's how we work. Don't live other people's life, please. That would be my I think wise words. We are well out of time. I think we have to wrap up. ठीक है. All right, guys. I don't think we have any other questions. No, we don't. Okay. All right, guys. Thank you for dialing in. And Guruji, thank you so much. It's always a fun to have you along. Thank you so much. मजा आ गया. हाँ, and अगर लंदन आ रहे हो तो बता देना. अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन आऊंगा तो डेफिनेटली. हाँ, अप्रैल में मैं इंडिया आ रहा हूँ. अप्रैल में? ओके. पुणे आ रहे हो? हाँ, डेफिनेटली. ओके, डन. डेफिनेटली घर पे. I will be in India for at least 3.5 weeks. Okay. Good. I'll contact you. ठीक है? Yeah. Come home then. ठीक है then. चलो then. Okay then. All right. Thanks for dialing in. Please be spiritual and be happy. Thanks very much and take care. All right. Bye, guys.